crushed gravel are different varieties of fine aggregates. Sand should be hard, clean and free from adherent coatings, organic matter, etc. Fine aggregates should not contain more than 5% of silt, clay lumps and chemical impurities. The silt content should not be more than 3% for river sand and 15% for manufactured sand. These materials adversely affect the hardening, strength and also durability of concrete by initialization of corrosion of reinforcement. Any organic impurities like leaves, grass roots, decayed vegetation will interfere with setting and binding properties of concrete. Sea sand should not be used as it causes efflorescence, corrosion of reinforcement and retards setting, hardening of concrete. Damp sand exhibits more volume. This is called bulking. When the damp sand is measured by volume, up to 15% extra sand is to be added to compensate for bulking. Sand should be so stacked that dust and other foreign matter are prevented from getting mixed with it. Due to adverse impact on environment by rampant mining of natural sand, the government is encouraging the use of manufactured sand, which is satisfactory for making concrete. Manufactured sand is scientifically produced in specially designed crushers to ensure the compliance with national standards. Users should not be confused between manufactured sand and crusher dust. Crusher dust is the waste product from manufacturing of coarse aggregates which have very high considered the best as they develop good bond with cement paste. They are gravel or broken stones and should be chemically inert, hard, strong, non-porous. Dirt coating and organic matter may impair the strength and durability of concrete and hence should not be present in excess quantity. Aggregates should not absorb water more than 10% of their weight after immersion in water for 24 hours. Those which absorb more water are porous aggregates and are not desirable to be used in making concrete. Flaky and elongated aggregates should not be more than 35% by weight of the total quantity. For getting the best performance of concrete, angular and roughly cubical aggregates are ideal. The aggregates should contain different size fractions to ensure good packing of particles, thus reducing the voids and increasing the density of concrete. For most of the concrete works, 20 mm and down size of aggregates are used. To ensure that all the size fractions are present in the aggregates, 20 mm and 10 mm aggregates may be combined in the ratio of 60:40 or 70:30. Ideally, aggregates of
damp-proof course. The surface on which the damp-proof course is laid shall be thoroughly cleaned and wetted before starting the work. Cement concrete of 1:1.5:3 proportions along with suitable waterproofing compound in recommended dosage shall be mixed. The concrete has to be laid to a minimum thickness of 25 mm on the surface. After hardening of the concrete layer, a thin layer of Seal and Dry, which is a cement-based waterproofing compound from Ultratech or any other similar material, has to be applied in 2 coats perpendicular to each other with a gap of 4 hours between the coats. For application of Seal and Dry, you may refer to our video on waterproofing. The damp-proof course shall be laid to the full width of the walls and the edges shall be straight, even and truly vertical. The DPC should be laid at such a height that it is above the normal level to which water splashes from the ground when it is raining. The level at which the DPC starts should be minimum 15 cm above the highest ground level. The cover is the minimum clear distance from the reinforcement to the face of concrete. It is measured from the outer edge of stirrups or ties for beams and columns to the outer surface of concrete. It protects reinforcement from corrosion and provides resistance to fire damage. The cover enhances the durability of the structure. Cover distance is ensured by providing cover blocks between the reinforcement and shuttering before pouring concrete. The thickness of the cover varies depending on the type of exposure that the concrete has with surrounding environment. If the concrete is exposed to marine or aggressive surroundings, or if it is inside the soil having harmful chemicals, higher cover should be provided. More cover should be provided if concrete has to withstand accidental fire for longer duration. Cover thickness can range from 20 mm to 75 mm. The cover concrete should be dense and impervious. Stone chips, tile pieces, etc. should not be used in place of concrete or good quality PVC cover blocks. In slabs, the spacing of the cover blocks should be such that the reinforcement does not sag, with sufficient number of supports to withstand all the loads till the concrete hardens. Even though there are different varieties of formwork, the generally used formwork in house building segment is made of wood and steel. The wooden bullies or props supporting the formwork should be kept truly vertical. The bullies should be 100 mm diameter at the mid-height and 80 mm diameter at the end. They should have a spacing of not more than 1 meter center to center and should rest on firm base. The wooden planks or the mild steel sheets forming the centering are to be properly aligned to the required levels and dimensions. The gaps between the planks or sheets are to be sealed with mastic tape to prevent the leakage of slurry. The soffits and sides of the beams are to be firmly held by suitable clamps or any other arrangement. A thin film of shuttering oil or grease shall be applied on the surface of the formwork to ensure easy de-shuttering. Before placing the concrete, sawdust, wooden chippings, paper pieces, etc., if any, are to be removed from the formwork. The shuttering of the vertical faces of the beams should be removed first, followed by shuttering forming bottom of slabs. Lastly, the shuttering forming bottom of beams should be removed. The centering up to a span of 4.5 meters can be removed after 7 days and over 4.5 meters removed after 14 days, leaving the props below the beams.
moisture of freshly placed concrete to ensure proper hardening, attaining desirable strength and durability. Curing keeps the concrete surface moist and reduces the shrinkage cracks. Curing should be started at the earliest. It has to be started when surface is hard enough for a person to walk over it without damage to concrete. Till such time, the surface moisture may be maintained by splashing or spraying water without force. Method of curing depends on type of member. Ponding is used for flat members like slabs. It is done by impounding the water to a depth of around 50 millimeters. The slab is to be divided by constructing small bunds with lean mortar or mud. Bunds are filled with water. Ponds are replenished with water at frequent intervals. Wet covering is generally used for columns, sloped surfaces, beams, concrete walls. The concrete surfaces are to be covered with wet jute bags, burlaps, straw, etc. Water is sprinkled on these coverings at regular intervals to ensure continuous wetness. These should not be allowed to dry even for a short duration. Sprinkling or spraying method is generally used for masonry and plaster. The frequency of spraying or sprinkling should ensure that the surfaces are continuously moist. It is advisable to cure the members for a minimum period of 10 days. Intermittent curing is more dangerous than not curing, as it leads to The method of laying the flooring using vitrified tiles and granite is shown. Flooring shall be laid on base concrete of 1:4:8, which is provided with adequate slope. In the absence of base concrete, the earth shall be properly sloped, watered, rammed and consolidated. The base concrete or the RCC slab shall be cleaned, wetted and mopped before commencement of the flooring. A bed of cement mortar having 1 part of cement and 4 to 6 parts of sand is to be laid to an average thickness of 20 mm and minimum thickness of 10 mm for vitrified tiles. The minimum cement mortar bed thickness shall be 12 mm for granite flooring. The mortar shall be spread, tamped and levelled. It should be allowed to harden sufficiently to offer a stiff base for the tile to be set in place. Cement slurry of honey-like consistency shall be spread on the bed at the rate of 3.3 kg of cement per square meter, on which the tiles shall be fixed one after the other. The tiles shall be gently tapped with wooden mallet till it is properly set and in level with the adjoining tiles. The joint shall be kept as thin as possible. The spacers may be used to have uniform joints. The joint shall be cleaned off the grey cement slurry to a depth 2 to 3 millimeters and all dust and loose mortar shall be removed. It shall be flush pointed with white cement mixed with color pigment to match the color of tile. For laying of the granite slabs, cut the slab to the required size and shape. The bedding mortar shall be spread over the base concrete under each individual slab. The granite slab is then laid over it, gently pressed with wooden mallet and levelled. The granite slab is then lifted up and fresh mortar is added to the hollows of the bedding mortar. The mortar is allowed to harden slightly and cement slurry of honey-like consistency at the rate of 4.4 kg of cement per square meter shall be spread over the mortar. The edges of the slab laid in place are smeared with cement paste and then the next slab to be laid is placed in position. It is gently pushed and tapped with wooden mallet till it is properly bedded and level with the adjoining slabs with as fine joints as possible. The cement paste that might ooze out through the joint shall be cleaned off. अभी हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स में फर्स्ट एग्रीगेट्स, कोर्स एंड फाइनल एग्रीगेट्स, फॉर्म ऑफ कवर ब्लॉक, फुटिंग, बीसीसी, टैप फोर्स, कंक्रीट फ्लोरिंग, एग्रीगेट और कॉलम, बीम, स्लैब, बिल्डिंग, फ्लोरिंग एंड फिनिशिंग वर्क. सबसे पहले एग्रीगेट्स आएगा. अब एग्रीगेट्स में दो एग्रीगेट्स, फाइनल कोर्स एग्रीगेट्स.
तो पहले हम देखते हैं फाइन एग्रीगेट्स क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है फाइन एग्रीगेट की। फाइन एग्रीगेट्स आर दोज व्हिच पासेस थ्रू IS 4.75 mm, मतलब 4.75 mm तक होता है, उससे पास जो एग्रीगेट्स हो जाएगा वो जो हमारा फाइन एग्रीगेट होगा। अब कौन सी एग्रीगेट का सेम वैसे डेफिनेशन हो जाएगा, जो एग्रीगेट बचा रह जाएगा ऊपर वो हमारा फोर्स एग्रीगेट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म इज द टर्म गिवन टू आइदर टेम्पररी और परमानेंट मोड। टेम्पररी और परमानेंट मोड होता है फॉर्म। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे जो ये मोड है यहाँ स्टील है, ये जो कमर्शियल पर्पस से कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो है स्टील का यूज होता है। जैसे ये और गाँव में हम जब घर पे देखा होगा तो इस तरीके से गली जैसे बोलते हैं गली इन द कंस्ट्रक्शन बाय फॉल्स प्रोटेक्ट शटरिंग मोड। शटरिंग कॉलम होता है उसमें जो फॉर्म यूज होता है उसको हम शटरिंग कहते हैं। अब एक चीज़ और हमने देखा था जैसे प्लाईवुड लगा के स्लैब लगाने के लिए, तो प्लाईवुड के नीचे थोड़ा सा गैप रह जाता है, तो यहाँ पे भी गैप रह जाता है। अब यहाँ से जो कॉन्क्रीट है वो नीचे रिसाव में समझते हैं वो नीचे करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे मटीरियल लगाते हैं। खोल लेता हूँ लगा देंगे यहाँ पे, तो अड्डा टाइप का कीड़ा मतलब साइड पे रहते हैं वहाँ पे एक अलग ही मटीरियल कवर ब्लॉक यानी वहाँ पे देखा बहुत सारी मटीरियल सेंटर सेट में यहाँ पे नीचे फोटो लगाया है। कवर ब्लॉक क्या होता है पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A cover block is essentially a spacer that is used to lift the rebar matrix of the ground so that the concrete will flow under the rebar. rebar मतलब क्या होता है, ये स्टील होती है, स्टील का एक जो रेनफोर्समेंट होता है, रेनफोर्समेंट उसके का एक rebar होता है। जैसे स्लैब पे जो रेनफोर्समेंट लगाते हैं उसके नीचे जो है कवर ब्लॉक लगाते हैं। अब क्या प्रॉपर्टी होती है कवर ब्लॉक की? अबाउट कवर ब्लॉक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कवर ब्लॉक के। क्या पॉइंट्स है? कवर ब्लॉक इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कोरोजन एंड फायर एक्सीडेंट। कोरोजन सभी भी बताया था कि कोरोजन से बचाता है और फायर एक्सीडेंट। इट शुड बी मोर एग्रेसिव एनवायरनमेंट। एग्रेसिव एनवायरनमेंट वहाँ पे जैसे कि जहाँ अर्थक्वेक होने की संभावना हो और बहुत सारी चीज़ें एग्रेसिव पेन एयर हवा तेज चलती है, अमेरिका में पेन बहुत तेज चलती है तो उससे कवर डिपेंड अपॉन टाइप्स ऑफ मेंबर एंड एक्सपोजर कंडीशन। डिफरेंट मेंबर्स के लिए डिफरेंस होती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर में इससे पहले यहाँ पे देखिए राउंड है, तो डिफरेंट कॉलम के लिए अलग होगी, स्लैब के लिए अलग होगी, डिफरेंट कंक्रीट कवर में डिफरेंट देन दोस मेड विद अदर मटेरियल। मतलब कंक्रीट डिफरेंट हो जाएगा, कंक्रीट का कवर डिफरेंट रहेगा देन अदर मटेरियल। जैसे बहुत से होते हैं टाइल्स का कटा लगा दिया तो वो क्योंकि एक सेम मटेरियल हो जाता है ना तो ज़्यादा बेनिफिट है। नेक्स्ट footing very important footing is a part of foundation that helps support the foundation so that the structure does not settle. footing जो फाउंडेशन का पार्ट होता है। अब ये इसका बेनिफिट क्या है, जैसे अगर फाउंडेशन सेटल हो सकता है, जमीन जो है एक बार जब फाउंडेशन बनाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी होती है थोड़ी सेटल करने की, लोड लेगा तो जाहिर सी बात है सेटल होगा थोड़ा सा, तो इसलिए हम footing करते हैं। it is primarily made of concrete dीवार reinforcement। दीवार में बनाकर क्या होता है the depth and width of the footing depends on types of soil and the size and type of बना वीडियो depth अब तुम बनाओ ना यार, बना ऑफ कर दो, बना फाउंडेशन आपका कैसा है कमर्शियल के लिए उसके ज़्यादा होगा और डिफरेंट टाइप से नेक्स्ट स्लाइड। डीपीसी ये इंपॉर्टेंट है, सभी भी बहुत बार जिक्र किया होगा इसका। डीपीसी हाँ क्या डीपीसी क्या होता है, क्या जो सीलन लग जाती है पीएमसी में हमने पढ़ा होगा। ये डीपीसी सीलन अक्सर देखा होगा घर में, खासकर बाथरूम में जहाँ होता है वहाँ पे लग जाती है, उससे प्रिवेंट करने के लिए है। The development create hygienic condition in the building can also reduce the extent of steel concrete। मतलब ये hygienic condition create करता है और उसके बाद extent जो है building की reduce हो जाती है। Then of course prevent the moisture rising up the walls from the ground। moisture जो नमी rise होती है ground से wall तक उसे prevent करता है, area यहाँ पर रखा जाता है। अब layer की thickness क्या होगी, इसमें तो mm में लिखा है, मैं सेंटीमीटर में भी आपको बताऊँगा। 38 mm to 50 mm थी ये सी हाइट होती है, इसको लेता भी होता है और सेंटीमीटर हुई 2.5 to 5 सेंटीमीटर का होता है। अभी डीबीसी की ग्राउंड लेवल कितना होना चाहिए, तो जो हाईएस्ट ग्राउंड लेवल है उसे 15 सेंटीमीटर लेवल डीबीसी लगा दीजिए। फाउंडेशन यहाँ लगा दिया ये, तो ये जो है 15 सेंटीमीटर लेवल होना चाहिए हाईएस्ट ग्राउंड लेवल, इसके ऊपर हम डीबीसी लगाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। कंक्रीट पूरी ये हमने एक वीडियो भी तैयार किया, डिफरेंट टाइप्स मतलब बहुत सारे वीडियो कलेक्ट करके उसको फ्रेम में मर्ज करके वीडियो तैयार किया, उससे सारी चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएगी। वैसे कि मैंने वहाँ से लेके यहाँ बता दिया। कंक्रीट कोरिंग, कंक्रीट कोरिंग अब ये क्या नाम है, कंक्रीट इज कोरिंग इज फास्टर एंड एफिशिएंट देन मैनुअल कोरिंग। ये
ये मेथड ऑफ कोरिंग जो है ये फास्टर है। एफिशिएंट कोरिंग, मैनुअल कोरिंग मतलब जैसे वर्कर से लेबर से करवाते हैं कोरिंग, तो उससे ये फास्टर है, ठीक है। और बेनिफिट ऑफ दिस कोरिंग इज वाइब्रेटर और नॉट यूज फॉर कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन जैसे कि अगर मैनुअली हम कोरिंग करते हैं तो उसके लिए कॉम्पैक्शन के लिए क्या नाम है, वाइब्रेटर्स यूज करना पड़ता है। मगर इसमें तो यहाँ पे स्लम के सीवी के साथ में बड़ा होगा कि उसी में वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइब्रेटर्स